सुप्रभात एवं सादर नमस्कार। आप सभी को 40वें क्रिस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी का इस भव्य वार्षिक समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह विशेष दिन हमारे संगठन की प्रतिबद्धता, नवाचार और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि हमारे साझा प्रयासों, उपलब्धियों और सतत विकास की कहानी को एक साथ संजोने का अवसर है। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति इस आयोजन को और भी विशेष बना रही है। इस शुभ अवसर पर हम अपने माननीय अतिथियों का स्वागत हरित पौधे के साथ करेंगे, जो जीवन, नवीनता और सतत विकास का प्रतीक है। यह हमारी प्राकृतिक संतुलन के प्रति जिम्मेदारी और सुंदर भविष्य की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है, also symbolizing our collective efforts towards realizing Indian Railway's target of achieving net zero emission by 2030. I request MD Sir to please present potted plants to our honorable dignitaries. Shri Ashwini Vaishnaw ji, Honorable Minister of Railways, Information and Broadcasting, Electronics and Information Technology. Honorable CEO and CRB, Railway Board, Shri Satish Kumar ji. Honorable Member, Infrastructure, Shri Naveen Gulati ji. Honorable Member, Operations and Business Development, Shri Hitendra Malhotra ji. Honorable Member Finance, Ms. Usha Venugopal ji. We shall begin further proceedings with invocation of Lord Ganesh. I warmly invite my esteemed colleagues to present the Ganesh Vandana. शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते. I now respectfully invite our distinguished dignitaries to kindly inaugurate the event by lighting the ceremonial lamp. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। Thank you, sir. May I respectfully invite Honorable Managing Director, CRIS, Shri GVL Satyakumar sir, to kindly take the proceedings forward. Honorable Minister for Railways,
my electronics information and technology and information and broadcasting, Sri Ashwini Vaishnaw ji, Chairman Railway Board and CEO Sri Satish Kumar ji, and the Chairman of the Executive Council of CRIS, Member Operations, Member Infrastructure, and Financial Commissioner. First of all, I would like to welcome all of you on this occasion, and also to all the entire CRIS fraternity here. I extend my heartfelt greetings on this 40th Foundation Day of CRIS. CRIS has been constituted in 1986 on the 1st of July 2025, and in the last 4 decades, it has rendered yeoman service to the Indian Railways. While the first 2 decades have primarily focused on two major IT applications, that is the freight operation information system and the passenger reservation system. The last 2 decades have seen an unprecedented growth in IT applications across the entire spectrum of functions of the Indian Railways. So much so that as we stand today, there is absolutely no activity which is being carried out on the railway which is not getting into a backend database. So as we stand at this juncture, there are strengths and weaknesses of how CRIS has evolved. And upfront, it was never thought of in terms of being an enterprise architecture for CRIS. The mandate was to design, develop, deploy, maintain the entire IT applications and the attendant infrastructure. And the evolution, while being an organization with data which is rich and amenable, if I may say, among all the ministries in the government for the new age technologies of AI and ML, the evolution itself has inherent issues that need to be handled in terms of the discrete systems which have evolved over different periods of time. And we are thankful at this juncture that the chairman of our governing council, Honorable Minister, has been guiding us right through this journey for the last 2 years in terms of forming the digital core of the Indian Railways. I think in terms of the application platforms, the analytics platform, the infrastructure platforms of the hardware and network, as well as the cybersecurity and the capabilities platform. The focus has essentially been on how to strengthen the platforms and solidify the digital core for the Indian Railways. And we are at a juncture where many of the initiatives have reached to a fruition. And with these words, we, I would like to commence the proceedings of the day by inviting Anisha Pandya, the principal project engineer and the team lead for Super App, which is on the agenda for the launch today. नमस्कार सर. RailOne, your one-stop shop for all public-facing rail services. With one RailOne login, start your journey with a super easy login. This app gives you everything in one place, whether it's booking reserved or unreserved tickets or checking your platform. The home menu gets you there faster. Book tickets, check train details, and get help through Rail Mother. No more switching between different apps. Just download RailOne and you're all set. RailOne is a smart, easy to use app that makes your experience simple and smooth.
Check your PNR status using PNR inquiry feature even if you have booked your ticket elsewhere. Track current location of your train before and during journey by just entering train name or number. Booking tickets is now quick and hassle-free. The app has its own wallet called Our Wallet. You can use it to pay for anything in the app. Plus, get a 3% discount when you buy unreserved or platform tickets using Our Wallet. Need help? You can raise any railway issue right from the app using RailMother and get fast solutions. In the use section, you'll find a personalized space to manage your details and save your list of passengers. Track your upcoming journey at a glance right from your Rail One dashboard. The app works in both Hindi and English. To start using it, just download Rail One from the Play Store or App Store. Thank you, Anisha. The super app RailOne for Indian Railways has been launched now, and it is available for download for the citizens of India. I would thank the Honorable Minister for Railways for having launched this app on the 40th Foundation Day of CRIS. Thank you very much, sir. I would also like to take this opportunity to present the CRIS's quarterly publication on a topic which is absolutely dear to our minister. Right from day number one, the theme and of all the governing council meetings, what we had and various interactions was on to solidify the core of the digital infrastructure of Indian Railways. Now I would request the Honorable Minister to launch this ebook. The book is about firming the digital core on Indian Railways, wherein we tried to attempt to take a futuristic view in terms of first assessing the as is status of Indian Railways on the digital infrastructure and assess as to what could be the to be state and the journey we have undertook up to now and what we want to do going forward. So all the 6 platforms of applications, analytics, hardware infrastructure, as well as cyber security, resilience, and capabilities have been assessed using a framework which was developed and to make it very clear that the digital infrastructure is for catering to the various functions of the railways, which finally dovetail into the return on capital employed. All the 6 functions of railways have been assessed, and the gap analysis has been done, and also the initiatives taken up to now in terms of the cybersecurity platform, where in IRSOC, a mega project of 600 crore is likely to be commissioned for implementation next month, and be it the cloud platform, which has been very dear to us. We have already migrated 50 applications onto the cloud, and now we are taking a further 30 applications, and the hardware of worth around 250 crores has already been delivered, and we expect this DCDR setup to be ready and commissioned by December 25. And notwithstanding that, I think the flagship project of PRS modernization, which has been dear to our minister, will definitely go on stream by December end, where we would be taking up the capability of moving from 32,000 tickets per minute to almost around 1.5 lakh tickets per minute by December 25, and further scale it up. With this, I hand over the proceedings for Ronak. थैंक यू सर। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ माननीय श्री सतीश कुमार जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। राजस्थान में जन्मे श्री कुमार 1986 बैच के IRSME अधिकारी हैं
आपने मार्च 1988 में भारतीय रेल में अपने करियर की शुरुआत की एवं अपने विस्तृत कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न जोनों और मंडलों में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। रेलवे प्रणाली में नवाचार, कार्यकुशलता में वृद्धि और सेफ्टी में सुधार आपका अहम योगदान रहा है इन सब में। माननीय सर, आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रेरणादायक विचार हमसे साझा करें। Good morning, Honorable MR, Member of the Board, MD CRIS, and dear friends. It's a great occasion to be the part of the 40th Foundation Day of the CRIS. It's my honor to address you on the 40th Foundation Day of the CRIS today. We celebrate not just the passage of the time, but the remarkable journey of the digital transformation that Indian Railways has undertaken. What you see on the board is the perception. That is the core of the CRIS, and the perception is nothing but a feedback. And when it is compounded, when it is matched with intelligence, that is where the CRIS role is. And finally, to control it, I think the three words today are aptly described on the Foundation Day. Indian Railway is not a just transport utility. It is a beating heart of the Indian economy, enabling connectivity, mobility, and the commerce across every corner of the nation. Operating such a colossal system demands more than just a physical infrastructure. It demands digital intelligence to use the asset properly. Over the years, the CRIS has been at the forefront of the digitization of the railway functions. From passenger ticketing initially started, freight booking to asset management and HR and whatnot today, our IT systems have become the backbone of our railway operations. Under the visionary guidance of Honorable MR, the CRIS has embarked upon a journey of the transformation from the technology support organization to the strategic architect of the modern IT system. The initiatives such as the IR Cloud and the Super App underscores the commitment to building a future-ready digital ecosystem of Indian Railways. And what today you see the Super App, it has been discussed number of times, and the name it has come today, RailOne. I think it is a properly defined. I think we discussed many names, sir, but finally the name which has come, I think it is a remarkable. That is what all of us can agree. In a system as vast as ours, the information technology is not a support function. It is a critical driver of efficiency, safety, service delivery, and the strategic growth. Today, IT enable us to monitor locomotive in the real time, manage freight logistic with precision, provide passengers with instant access to services, use data analytics for predictive maintenance, and optimal resource allocation. Let me just highlight some remarkable achievements of the CRIS. IR is on the track to issue up to 1.5 lakh tickets per minute by September or December, what has already mentioned by the MD CRIS. This will be one of the greatest thing. I think that is where we will be really embarking into the area where the capacity is not the constant at all. Almost 100% of the IR revenue and the expenditure managed digitally. This is one of the important things, and largely CRIS has done it. Few areas have been left out. They are still looking into it, but largely it has been done. Real-time tracking in collaboration with the ISRO covers most locomotive with the full coverage expected within a year. More so, not only even whenever the need has come, and the CRIS has done it so fast, even for the matter of the trains which has been diverted. Normally, those position was not available to the passenger. This issue came up during the discussion. But I think CRIS has taken only 12 days or 15 days when these people came to the solution. And now, sir, all the passenger, even for the diverted trains, they have the
expected time when the train will reach. This is one of the important feature what has been added. What I am mentioning, that when the need comes, when the perception is there, then you act. That is where your role is, and you are aptly doing it. 90% of the parcel bookings are tracked online, and the freight tracking is available through the FNR numbers. All tenders, non-fare earnings are managed through digital procurement and e-auction systems. In ensuring the tickets reliability, or the I can say the forged ticket, the CRIS has really done a wonderful work for unreserved tickets, where when the issue has come up, you have given a application where by the UTS number you can really check it. And just to mention, sir, in one of the case which has come to my notice through the newspaper, and our staff TT has been able to identify that platform ticket, sir, which was issued for the platform ticket, but while forgery, sir, it was made as a regular ticket for the train journey. So that is your role. I think I was after this module, since I was SDGM NWR, and you people have done it. That is remarkable. 80% of the HR processes are digitized, and the rest to follow by December 25. We need to further refine it in the manner that the the user is really satisfied. There is always scope for improvement. I am sure you will be doing it. Data logger systems provide backup where GPS tracking is unavailable, ensuring redundancy and reliability. Indian Railways remains untouched by the major cyber attacks. This is something I think that is the core, and I think you people are working to strengthen this core. A testament to CRIS skill network and the cyber security engineers. Over 900 softwares, networks, and security professional ensure the seamless continuity and the upgradation of the applications. CRIS IT infrastructure spans over 1400 servers across 5 data centers with ongoing optimization of hardware and the software architecture. The upcoming state-of-the-art ROC will integrate SOC, NOC, and the cloud center for enhanced monitoring and security. In-premise cloud is among the largest in the country and the supporting mission-critical applications. CRIS has a 300 strong pool trained in AI and ongoing collaboration with IIT Delhi. End-to-end digitization of the rolling stock and the fixed infrastructure management is the enabler for driving unit costs for all R&M activities. Optimizing freight maintenance. Applications are connected through ESB and the APIs, creating massive ERP-like system for Indian Railways. Also, sir, I just wanted to mention you, whenever CRIS was given any role, they have done it in a shortest possible time. I think for the Mahakumbh also, just wanted to mention, they developed the application within 15 or 20 days. And with that application, we were able to manage all 10 to 12,000 railway employees who were deputed to that. I think, and there was no issue at all. Before the person could land up in Prayagraj, he knew uska rehne ka kahan par hai, uske ghar ka number kahan par hai, koi emergency ho jaye. I think that kind of seamless. And just to mention, that application, sir, was again used for this Rath Yatra also, because they have made it in a manner, it is scalable and modular. I am happy to note that the CRIS is leading the implementation of the IR1 ICT platform, our vision for a unified digital infrastructure for Indian Railways. The goal is ambitious but clear: to make railways data-driven, transparent, and agile by ensuring the data is collected at the source. There is a single source of the truth for all information. This is very important. Real-time dashboards empower railway managers.
Decision making is backed by the analytics and the simulation tools. With IR1 ICT, and we can expect significant gain, 30 to 40% increase in the network capacity, smarter energy uses, streamlined asset management, and vastly improved passenger and the freight services. This platform will act as a digital nervous system of the Indian Railways. In train and locomotives, CRIS is developing IoT sensors for monitoring key systems like brakes, electrical, and environmental controls. Systems like ICMS, RTIS provide real-time coaching stock and the train movement of data, transforming both operational efficiency and the passenger safety. I believe that there has been significant progress in the realm of the backend integration and analytics. CRIS is moving toward using Industry 4.0 technologies to unlock value across enterprise. Freight Operation Information System is optimizing freight movement and reducing delays. Big data analytics, AI, ML, and the quantum simulation are on the track to be used for predictive maintenance, demand forecasting, network resilience. Enterprise dashboard will soon provide holistic visibility of a top management, making oversight smarter and more timely. Also, sir, I wanted to mention in a case related to business development, they have completely mapped all the GST e-way bill of all the across India, and this has helped us to map our future loading for Indian Railways. Now the traffic, the person who is really analyzing, he doesn't have to go to anywhere. He has to simply, there's a one BI tool already, you people have made it, they can do distance, they can just select, and what are the items which are going, you know that now accordingly you can map your road rail load. I think this is where our BDU units required, and you did it phenomenal. As the achievements are, we cannot rest upon the past laurels. Looking ahead is very important, and our priorities are clear. Accelerate the adoption of the analytics and the AI for predictive maintenance and operational optimization. Integrated control centers powered by the real-time dashboards. IoT and the sensor-based technologies for automated monitoring. Cloud-based scalable infrastructure that is future ready, strengthen the cyber security and the network resilience, foster continuous learning innovations among our workforce, mobile apps that unify services for both customers and employees, compile the digitization of the HR and the asset management processes. What lies ahead is a challenging as well as exciting. We look to, to CRIS not just as a software developer, but as a strategic digital partner capable of shaping the future of the public transport across the country. My association with CRIS, when I was CMP Diesel, when Naveen was here, he will remember that we have developed that in loco applications, all the SMSs what are currently, that was the first time when we thought, myself and Naveen, that time in 2011 or 12, can the driver not enter his observations when he completes the journey. That was the first time we did it. I have sat in this in the CRIS building number of times when I've come and discussed with him, and the way it was developed and further smoothened. Actually now हम यहीं से बैठ करके देख सकते हैं कि किस लॉबी में किस ड्राइवर ने क्या abnormality करी है. Otherwise it was just in a registers. I can just say in only in a registers. Now the information is just transparent. A CME, a PCEE can just see what the various lobbies, what is there. So that is very important, and that is where your role is, and you are perfectly doing it. And the big applause to all of you. The railways of the future will not be run by the steam or diesel, or even just by the electricity, but with the data, intelligence, and the connectivity. And it is the CRIS that will lay the digital track for that journey. Let us work together to ensure that Indian Railway is not just the largest railway system in the world, but also the smartest and the most responsive one.
I thank all the members of the CRIS family, our partners and leadership for their unwavering support. Together, we will continue to lead Indian Railways into a new era of digital excellence. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for sharing your vision. श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका कार्य और व्यक्तित्व स्वयं उनका परिचय है। श्री वैष्णव की शैक्षणिक योग्यता एवं करियर की उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं हैं। वे आईआईटी कानपुर एवं वाटन बिजनेस स्कूल जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के एलुमनाई हैं। पूर्व में आईएएस रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार उड़ीसा में साइक्लोन के दौरान तकनीकी का प्रयोग कर लोगों की जान बचाई, उसे लोग आज भी याद करते हैं। श्री वैष्णव रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में जन, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी टेक्निकल क्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता एवं कार्य के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। हमारा सौभाग्य है कि वे आज हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री वैष्णव जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। क्रिस के 40वें वर्षगांठ पर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कहें रेलवे का ब्रेन, तो रेलवे का ब्रेन क्रिस है। आज इस अवसर पर उपस्थित रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब, एमआई साहब, एमटी आरएस साहब, एमओबीडी साहब, मेंबर फाइनेंस, डीजी साहब, रेलटेल के और जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे, कॉनकोर के भी यहाँ पर एमडी साहब उपस्थित हैं, उपस्थित सभी सीनियर अधिकारी, मीडिया के सभी साथी और बाहर से आए हमारे अतिथि, सबको मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस दौर से आज हम लोग गुजर रहे हैं, पूरा देश आज जिस तेजी से परिवर्तन के एक दौर से गुजर रहा है, आज सारी दुनिया उसको एक अलग नजर से देख रही है। आज पिछले 10 वर्षों का जो काम हुआ है, उस काम के बाद में भारत की एक नई पहचान बनी है। दुनिया में भारत को एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है और भारत के कारण विश्व में एक पूरी एक नई आशा जगी है, एक नई होप जगी है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा रेल परिवार सबका बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तेजी से आपने सबने मिलके हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को साकार किया है, 35,000 किलोमीटर ट्रैक बना के कंप्लीट डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करके, मेरे ख्याल से अब करीब करीब 70% स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो गया है। कार्गो 1000 मिलियन टन से 1600 मिलियन टन पे पहुंचा दिया। पैसेंजर्स आज 730 करोड़ साल भर में ट्रैवल कर रहे हैं। नए टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स आ गई हैं, वंदे भारत आई, नमो भारत आई, अमृत भारत ट्रेन्स आई। जिस तेजी से आप स्टेशंस का निर्माण कर रहे हो, फ्लाईओवर्स का, अंडरपासेस का निर्माण कर रहे हो, उससे आज जनता में एक नया विश्वास जगा है और वो विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वो विश्वास हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और उस विश्वास को, उस ट्रस्ट को, उस कॉन्फिडेंस को और मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आज का ये क्रिस का फाउंडेशन डे बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे के फोकस में, इस इनकम पिरामिड में अगर हम देखें तो रेलवे के फोकस में लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम और मिडिल इनकम रहना चाहिए। जो परिवार लो इनकम के हैं, गरीब कल्याण हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण, हमारी पार्टी का एक भावनात्मक शुरू से मूल विचार रहा है।
हमारी सबसे पहली कमिटमेंट, हमारा सबसे पहला कमिटमेंट रहना चाहिए हमारे गरीब परिवारों के प्रति। उनके लिए हम कैसे एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, उनके जीवन को सुगम बना सकें, सेफ कंफर्टेबल ट्रैवल, अफोर्डेबल ट्रैवल कर सकें। लोअर मिडिल इनकम, जो कि गरीबी से उठ के मिडिल इनकम में आ रहे हैं, मिडिल क्लास में आ रहे हैं, वो सबसे वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि एक गलती हो गई परिवार में तो फिर से गरीब हो जाता है इंसान। उनका ध्यान रखना रेल परिवार की तरफ से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी बनती है। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आज रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहां लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन जन के जीवन में परिवर्तन लाए हैं। ऐसे में रेलवे का भी बहुत बड़ा रोल होता है। रिजर्व टिकट आज भी आईआरसीटीसी पहले की तरह करता रहेगा। आईआरसीटीसी और क्रिस दोनों साथी हैं। क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था। यूटीएस ऐप एक बनी थी पहले, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद में ये नई ऐप में अनरिजर्व टिकटिंग रहेगी। काफी सिंप्लीफिकेशन किया है, फिर भी अनुभव के आधार पे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आए वैसे चेंज करते रहना है। हमारा सारा फोकस कस्टमर्स की सेफ्टी पे, पैसेंजर्स की सेफ्टी पे रहना चाहिए। एक एक अधिकारी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी लेवल पे हो, लेवल 16 पे हो या लेवल 1 पे हो, डजंट मैटर। सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी का बहुत एकदम क्लोज ध्यान हम सबको लगातार देना पड़ेगा। और कोई भी इंसिडेंट हो, उसके रूट कॉज में जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। रूट कॉज को सॉल्व करके भविष्य में वैसी प्रॉब्लम ना आए, वो हमें सोचनी चाहिए। हमें अपने जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, चाहे पॉइंट्स एंड मशीन्स हो, चाहे सिग्नलिंग के इक्विपमेंट हो, चाहे डिजिटल एक्सल काउंटर हो, चाहे लोकोमोटिव्स के कन्वर्टर्स हो, सभी के स्पेसिफिकेशंस को कई गुने बेटर करने की जरूरत है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर क्वालिटी आने से रिलायबिलिटी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ने से सेफ्टी बढ़ेगी, ऑपरेशन सहज होंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए क्रिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपके कई डिफरेंट एप्लीकेशंस बने हुए हैं जिसका अच्छा उपयोग हो रहा है, लेकिन एक कॉमन आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत है। एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर होने से आगे की जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ स्मूथ रहेगी। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्रिस के लिए। और मेरा रिक्वेस्ट है क्रिस के कंप्लीट टीम से, साइबर सिक्योरिटी के जो वर्ल्ड में बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपनाएं। और विशेषकर जो नेटवर्क राउटर वाला पॉइंट होता है, जो कि सबसे वल्नरेबिलिटी का बड़ा एक कारण बनता है, उस पर विशेष ध्यान दें। आज अच्छे कई सॉवरेन क्लाउड्स देश में बनने लग गए हैं, तो आप जरूरी नहीं कि सब कुछ इन हाउस ही करें। आप अच्छे से अच्छी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद ले सकते हैं। आपका फोकस हो, क्रिस का हमारा फोकस हो कि हम किस तरह से हमारे इंटरनल कस्टमर्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स का ध्यान रखें। इंटरनल कस्टमर्स यानी रेलवे के सभी डिपार्टमेंट्स, एक्सटर्नल कस्टमर्स यानी पैसेंजर्स और वुड बी पैसेंजर्स, उनका हम ध्यान रखें। उनके लिए बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज क्रिएट करें, इजी टू यूज इंटरफेसेस रहे, बहुत ही फोकस्ड वे में बारीकी से, जैसे एक एप्पल फोन का डिजाइन होता है, एक एक बारीक पॉइंट से पॉइंट हर छोटी से छोटी चीज पे ध्यान दिया जाता है, वैसा हमें ध्यान देना चाहिए अपने हर सब्जेक्ट में। और ये संभव है क्योंकि आप में से जितने यहाँ पर रेलवे के अधिकारी उपस्थित हैं,
आप सब अपने अपने क्लास के टॉपर्स हो, टॉप 5% में से आप सब आते हो, टॉप 2% में से सभी आते हो। क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स, अपने अपनी जनरेशन के बेस्ट स्टूडेंट्स रेलवे में आए हुए। आप सब बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। माइंड को ओपन रखें, टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें, एम्ब्रेस करें, टेक्नोलॉजी को हम इनवाइट करें, जितना हो सके टेक्नोलॉजी को यूज करें। एक सैंडबॉक्स वाला सिस्टम बन रहा है रेलवे में भी, जिसमें कि नई टेक्नोलॉजी को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के बाद में फिर उसको लाया जा सके। डेवलपमेंट ऑर्डर का जो प्रोसेस है, जिससे नए टेक्नोलॉजीज को रेलवे में लाने का एक नया माध्यम बन सके, उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं रेलवे बोर्ड से चेयरमैन साहब, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज आसानी से आ सके। और विशेषकर जो दूसरे रेलवे सिस्टम्स में ऑलरेडी चल रही हो, मेट्रो में चल रही हो, आरआरटीएस में चल रही हो, दुनिया के दूसरे बड़े रेलवे सिस्टम्स में चल रही हो, उनको तो हमें तेजी से एब्जॉर्ब करना चाहिए, अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके। ये सब हमारे सामने आज बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के प्रति एक बहुत विशेष फोकस रखा हुआ है। हम सब जानते हैं 10 साल पहले कैपिटल के लिए बहुत ही हमें तकलीफ होती थी। कोई छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी करने के लिए उसमें कितने हमें चक्कर लगाने पड़ते थे। आज जनरल मैनेजर्स के पास पावर है, डीआरएम्स के पास पावर है, सारे के सारे टेंडर जनरल मैनेजर्स के लेवल पे अप्रूव हो जाते हैं। फंड्स, बजट अच्छा रेलवे को मिल रहा है, यूटिलाइजेशन भी ठीक हो रहा है। ये जो वक्त है, ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इस टर्म में रेलवे को एक नया स्वरूप धारण करने की जरूरत है। और इसमें क्रिस हो, रेलटेल हो, प्रोडक्शन यूनिट्स हो, रेल परिवार से सभी 2 करोड़ के आसपास लोग हैं, सब हम सब का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है। न केवल रेलवे के कर्मचारियों का, बल्कि रेलवे के साथ जुड़े हर व्यक्ति का दायित्व इसमें बनता है। कैसे हम साफ सफाई रखें, पैसेंजर्स का भी दायित्व है। कैसे हम रेलवे को क्लीन रखें, कैसे हम कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर वाले प्रिंसिपल से काम करें, कि अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत उसके बारे में शेयर करें कि हाँ, यहाँ पे ये सेफ्टी की रिस्क है, यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटी आई है। इन सब भावनाओं के साथ काम करें, जरूर एक नई रेलवे बनेगी, जरूर एक ऐसा मॉडल हम देश के सामने रख पाएंगे जिसमें इतने बड़े मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एजिलिटी आ सकती है। इतने बड़े, जो कहते हैं ना, कैन एलिफेंट डांस, वो चीज भी पॉसिबल है। इतना बड़ा मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन भी एजाइल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कस्टमर फोकस्ड बन सकता है, पैसेंजर फोकस्ड बन सकता है, और जन समस्याओं के निवारण का एक ओपन माइंड के साथ टेक्नोलॉजी को लेने का और देश की एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। मैं कई जगह पहले भी कह चुका हूं, आज वापस कहना चाहूंगा इस बात को। केवल देश में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेलवे और डिफेंस, जिनमें इतनी ताकत है कि देश की कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने का अगर क्षमता रखे तो ये रेलवे की टीम का है और डिफेंस की टीम का। ऐसे में जब देश को इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं तो हमें भी और मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक एक बात पे ध्यान देके उसके रूट कॉज में जाके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ओपन माइंड के साथ और कोलैबोरेटिव टीम स्पिरिट के साथ काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, देश में हर कोने कोने में रेलवे की प्रेजेंस है। कैसे हम सब मिलके एक बड़ी टीम की तरह काम करें, किस तरह से हम अपने बड़े गोल लें और उन गोल्स को मेथोडिकली अचीव करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और विशेषकर क्रिस को इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और भविष्य का इतना अच्छा रोड मैप बनाने के लिए मैं विशेष
अभिनंदन करता हूं, विशेष बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. First of all, I would like to thank our Honorable Minister for Railways for taking time out and being available here for this function on this momentous occasion for CRIS, and also launching the super app. I think this is one of the best initiatives. In fact, sir has been involved right from day one that this app should be the best. And let me tell you, I think sir himself has iterated it at least 15-20 times in terms of getting it perfect into a UI. I mean, almost we have seen 4 CRBs during the period, but during the entire journey, I think the perfection that was sought finally has been perhaps achieved, and I'm sure this app would be uh, taken by the citizens in a very apt manner, and it will be highly successful. And sir, your advice to us in terms of keeping always the customer focus and trying to take every detail into account while developing the applications, be it the UI as well as the backends, will definitely be taken by every one of our fraternity in CRIS, and we'll ensure that we exceed your expectations in the coming days. Once again, thank you very much for being with us today here, sir. Um, in the same vein, I would like to extend my thanks to the Chairman Railway Board and CEO Satish Kumar ji for being here and always being a guiding light to CRIS. And the last 6 months, the entire focus has been how to avoid touting and give a ticket to the best, to the deserving citizens. I think that that focus, be it night, 12 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, any idea, sir would bounce off and expect us to make a solution and come out with it. I would thank user for being here today. Similarly, I would thank member infrastructure Naveen Gulati ji for gracing the occasion, as well as Hitendra Malhotra ji, the member operations, the financial commissioner, as well as GM Northern Railway for gracing the occasion. And once again, I thank all of you for being here for the inaugural session. And sir, what we have planned for the next is a topic which is very apt, because data acquisition has been undergoing a rapid change from manual, semi-manual mode onto real-time sensors. And here it is, uh, we felt, and we are building up capabilities within CRIS to ensure that we take up this particular initiative of handling this data in the backend and building intelligence on top of it, and finally trying to control the systems. So we have a galaxy of speakers in the coming session, wherein uh, I have Mr. Popov Pavel. He's actually the director of St. Petersburg of NIAS, which is an organization which is equivalent to RDSO. In fact, they have 1,000 PhDs working on railways alone, and they have 5 universities in Russia. And yes, sir. And he himself is a chief constructor for autonomous trains. And in the last visit to Moscow, we have actually seen the autonomous train in the Moscow Circle, and he's going to talk to us on this. And because we just want to expand our knowledge in terms of not just being a software development agency, but also to try to give solutions which fit the requirements. So once again, I would thank everyone for being here for the inaugural section. Thank you very much.